मैं बात करी थी कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन की। करीब 8,800 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तेल गैस पाइपलाइन, रेलवे और बायोमास पावर जनरेशन का कामकाज करती है। कंपनी ऑफ कोर्स आज फोकस में इसलिए है क्योंकि कल कंपनी के नतीजे आए, सालाना आधार पर आय 18% बढ़कर करीब क्लोज टू 5,000 करोड़ रुपीस आई है। वहीं मुनाफा 46% बढ़कर 156 करोड़ आया है। हालांकि मार्जिन पर थोड़े से दबाव देखने को मिले। आगे किस तरीके का आउटलुक रखते हैं कंपनी और ऑर्डर बुक को लेकर कितने अपबीट हैं, आगे के प्लान्स समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी के डायरेक्टर अमित उपलेंचवर हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। नमस्कार स्वाति। सबसे पहले सर अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं ऑपरेशनली, आपके लिए ये हाईएस्ट एवर अर्निंग्स है अगर हम पिछले 13 क्वार्टर्स की बात करें तो। और पैट में भी अच्छा राइज देखा है, ऑलमोस्ट 45-46% का। एबिटा बढ़ा है 10% से। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इस क्वार्टर के हाइलाइट्स बताइए सर। सो स्वाति, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये क्वार्टर हम लोगों के लिए बड़ा ही हिस्टोरिक क्वार्टर है बिकॉज वी ऑन एवरी फ्रंट, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो एबिटा हो, चाहे वो ऑर्डर बुक हो, ऑन ऑल फ्रंट्स वी हैड अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। जहां तक आप हमारी रेवेन्यू की बात करें तो स्टैंड अलोन बेसिस पे इस क्वार्टर में हमारा 23% YOY ग्रोथ है। हमारी कोर एबिटा 38% से ऊपर बढ़ी है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 10% एट अराउंड 9.7%। और हमारा ऑपरेशनल पीबीटी भी ऑलमोस्ट 41% से बढ़ा है इस क्वार्टर में, क्लोज टू 6.4%। सो ओवरऑल हम लोगों की जो पिछले 2-3 साल की मेहनत रही है इन ऑर्डर टू increase our bandwidth by increasing our engineering capability, लोग हमने हायर किए हैं, हमने कैश फ्लो पे बहुत फोकस किया है, हमने क्रिटिकल केपेक्स एक्सपेंड किया लास्ट ईयर, और हमारी जो जेएमसी और कल्पतरू का जो मर्जर से जो सिनर्जी निकल के आई है उसका इफेक्ट ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी हैड अ वेरी वेरी गुड क्वार्टर रहा। आपने एक्सप्लेन किया कई मायनों में ऑन ऑल काउंट्स यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। पिछले 2 सालों की जो मेहनत है आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ फुलफिल होते हुए दिखी है। लेकिन सर थोड़ा सा डिक्लाइन जो मार्जिन में आया है आधे % का, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस से हम देख रहे हैं तो उसका क्या कारण था? और इनफैक्ट अगर मैं देख रही हूँ 6.8% आई थिंक इज़ द लोएस्ट मार्जिन फॉर यू सो फार। तो यहाँ से कैसे इम्प्रूवमेंट होगा? मार्जिन को लेकर आपका क्या आउटलुक है फॉर FY24? अगर आप कोर एबिटा मार्जिन देखें तो वाइल्स आपको वो 6.8 लग रहा होगा, which is probably around 50 basis points less than what we did last year, but we've also had 109 crores of gain that came in, and if you take that into account we are almost at 9% at core EBITDA levels, even at console level. देखिए हमारे यहाँ होता ऐसा है कि हम लोग बिकॉज बहुत ही कंजर्वेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं हमारी बैलेंस शीट को लेके, जो कि हम लोगों का कोर स्ट्रेंथ रहा है ओवर द लास्ट सेवरल इयर्स। इन दैट कॉन्टेक्स्ट जब हम लोगों का कोई भी लॉस कहीं होता है तो हम लोग उसको तुरंत बुक कर लेते हैं। एंड इन दैट regard, one of our power transmission subsidiaries also, whilst we booked the cost on that over the last 4 or 5 years, we've received an agreed gain of close to 109 crores on that, which is a operational cost that was booked over the last years and has been agreed upon now by the client. So if you take that into account, which is actually our cost, we are at 9% EBITDA, which is at 440 crores for the quarter, one of the best EBITDAs we've had in a long time. ओके श्योर। सो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जहाँ तक एबिटा की बात है। बैंड क्या रहेगा सर आगे मार्जिन्स पर? आपको क्या लग रहा है? व्हाट इज द रेंज दैट यू थिंक इज कंफर्टेबल एंड सस्टेनेबल? So we've always focused at, so एक तरह से I like this tagline to say growth with goodness, क्योंकि हम लोग सिर्फ टॉप लाइन के पीछे नहीं भागते हैं। If you've seen over the last several quarters, and as you said, over the last 13-14 quarters, we've always tried to maintain a close to double-digit EBITDA with a PBT of close to 4.5 to 5%. And that is exactly what we are going to focus on and try to close with even in the year ahead. Hopefully, we should get to a 4.5% to 5% EBITDA for FY24. फेयर इनफ। तो ये तो आपका रेंज है एबिटा का, जहाँ तक ग्रोथ विद गुडनेस जिसकी आपने बात की।
सर ऑन एन एनुअल बेसिस रेवेन्यू जैसे मैंने कहा ऑल टाइम हाई है, तो कैसे ये अचीव हुआ, थोड़ा सा और हमारे दर्शकों को समझ में आए किस तरह से क्या स्टेप्स लिए गए जिससे रेवेन्यू जो आपने अचीव किया है वो पहुंचा है, और क्या गाइडेंस होगी अब रेवेन्यू को लेकर, कितनी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हम रेवेन्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड? So, so far as first the last year's performance for revenue growth, we've had on a standalone basis close to 16% revenue growth. And that is primarily because, for after a long time, we have a cyclical business wherein out of the 6-8 sectors that we operate in, you will always see कि एक आध दो sector कभी-कभी lag करते हैं. But last year has been, especially the last 2 quarters have been very heartening because all our divisions are, performing very well in terms of growth. As a result of which, you see a heightened level of revenue coming in at the end of the year. For FY24, आज हम लोग L1 मिला के करीब 50,000 करोड़ 50,000 crores की order book पे बैठे हैं, which is well split both between international and domestic markets as well as across our different divisions. As a result of which, we are very confident that for FY24, at the very least, we should expect a 30% revenue growth on a standalone basis for our group. तो ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, इनफैक्ट मेरा अगला सवाल वही था सर, ऑर्डर बुक पर भी इनफैक्ट आई चेक विद यू थोड़ा डिटेल में उस पर, बट 30% ग्रोथ ऑन रेवेन्यू आप कह रहे हैं बेसिस द ऑर्डर्स जो आप बता रहे हैं जिसमें आप दैट विल बी क्वाइट हैंडसम सर. तो ऑर्डर बुक की अगर मैं समझना चाहूँगी बात, किस तरीके के ऑर्डर्स हैं सर दैट यू हैव इन द बुक्स, कौन से सेक्टर्स में ये ऑर्डर्स हैं, और क्या एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस हैं इसकी, और जो करेंट क्वार्टर में उसमें कितना एग्जीक्यूट होगा, एंड व्हाट इज द स्पिल ओवर? So, our orders for this 50,000, if I was to take a breakup, for once we are well diversified. So we have a water segment that is doing extremely well, aided by a lot of central government schemes across, several states that we are working on, everything from irrigation to networks, both urban as well as rural. So, that sector looks very, very strong, and very decent order book out of that 50,000 comes from water. We have our infra segment, which has, turned a new leaf and has started booking large value orders, which, is a synergy that comes out of this merger directly. We've got very large material handling projects coming with very large order values. We've got our T&D business on the domestic front, which was a little slow over the last year, has also picked up a lot of pace. We've booked a lot of orders over the last 2-3 months. And I think T&D as a whole, as a sector, both international and domestic, looks very, very strong for us. Our last 2-3 years of trying to open new markets that are, restrictive in terms of our usual competition has bore fruit. आज हम लोग चिले में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा ऑर्डर लोकल कंपनी के साथ जेवी में एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं. These are very, very high delivery markets in terms of quality, safety, execution timelines, etc. And you'll be quite proud to note that our company is one of the only Indian companies to be able to break into these markets, which are highly, highly evolved in terms of project execution capability. If you look at our oil and gas business, we are today now qualified in almost 7-8 international markets in Africa and Middle East. And that has set the stage to take our oil and gas market overseas over the next 2-3 years. So once you see, it's an all-round performance. All our business units, our building and factories division is at an all-time high. We have entered new segments like data centers, airports, hotels, hospitals, and real estate sector has, had a big bump up after COVID over the last 2-3 years, and that's helping us also. And we see this trend to continue over the next couple of years. Quickly, sir, real estate business अभी कितना contribute करता है आपकी revenue को? So I'm talking about the construction business of real estate, not the real estate itself. I'm talking about the contracting business. So today our building division will do close to 4,000 crores in the coming year.
सर हम आपके कैपेक्स प्लान्स पर अब जानना चाहेंगे, क्या एक्सपेंशन प्लान्स होंगे आपके और उसको फंड कैसे करेंगे, क्योंकि आई थिंक जो न्यूज़ आई है उसमें आपने कुछ इशुएंस ऑफ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड रिडीमेबल एनसीडीज़ की बात की ऑफ अप टू 300 करोर्स इन वन और मोर ट्रांचेस, तो उस पर थोड़ा अपडेट देंगे। तो स्वाति, अगर आप हमारा लास्ट ईयर का केपेक्स देखें जो FY22 में हमने क्लोज किया, हमने क्लोज टू 500 करोड़ रुपीस हमारे केपेक्स में इन्वेस्ट किया है, एंड दैट इज अ वेरी वन ऑफ द हाईएस्ट केपेक्स दैट वी डन इन रीसेंट इयर्स। एंड ये हमारी 50,000 करोड़ की ऑर्डर बुक को देखते हुए हमने उसका जो केपेक्स प्लान है वो सीक्वेंशियली ले किया है। FY24 के लिए हमारा ये आज की ऑर्डर मिक्स को देखते हुए करीब 275 करोड़ रुपए का केपेक्स का हमने प्रोविजन किया है और बजट है हमारा। होपफुली हम उसमें स्टिक करेंगे। अगर हमारी ऑर्डर प्रोफाइल चेंज होती है इन टर्म्स ऑफ the kind of orders that require a larger capex, we will revisit it at that time. But today we are looking at around 275 crores of capex, as we've done most of it last year already. ओके तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी तो और कैपेक्स की बात कर सकते हैं, बट फिलहाल जो नीड्स हैं वो इससे मीट होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और हमसे अपने बिजनेस के बारे में आगे किस तरीके का आउटलुक है वो शेयर किया। तो ये थे कल्पतरू पावर के मैनेजमेंट हमसे बातचीत करते हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर और खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, आप बने रहिए हमारे साथ।